हाय। वर्धा जी, हमारे शोलापुर के जो हमारे मित्र हैं, और महाराष्ट्र ने एक क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक शी इज़ नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ अ बिहेवियरल ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर। आई डू नॉट नो, दैट्स व्हाट आई गेस आउट। उन्होंने एक एक बात पूछी है कुटुंब फैमिली में, कैन NLP बी इंट्रोड्यूस फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट। 7 जुलाई में उन्होंने पोस्ट किया एंड लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग देयर एंड देर इज़ अ स्मॉल गैप यू हैव टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि NLP का मतलब है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज़ व्हाट वर्धा इज यूज्ड, बट आफ्टरवर्ड्स आई हैव अंडरस्टूड शी इज एट द एंड, she has also written that NLP is being introduced for improving concentration, for relationship among students. If you are talking about improving concentration and all those things, yes, you are talking about neuro-linguistic programming, okay, not natural language processing, okay. Can this be done? Very, very great question, Vardhaji. I salute you. Okay. Yes, if you improve, if you apply NLP in the high school level, the productivity of the Indian school will go at 100x level, 100x, not 10x, 100x level. I talk from my experience. I don't talk theory to impress somebody else. Okay. So you may ask me how. So tell you, I am not an authority on NLP. आपको कोई चीज़ बताता हूँ. NLP was found by Dr. Richard Bandler and John Grinder. दो पोइनर थे, हमने डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर से सीखा, नंबर 1. एंड नंबर 2, many of the NLP practitioners who have learned subsequently from second generation teachers, they are learning only to teach to others. They are never applied on this one. अगर आप NLP का फर्स्ट सर्टिफिकेट देखेंगे ना, इट्स कॉल्ड अ प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट, ओके, नॉट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. Practice, 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 practice. Before you go to level 1 to level 2, you have to practice. So when I went to level 2, I was asked, what is that you have uploaded the project? Then I told I have written around 200 articles in Varta in Telugu. When I went to level 3, I applied it on prisoners of Central Jail. वो लिखा था. That is how the filtration system worked at that time. अभी तो क्या है, आपको मॉर्निंग बेसिक मिल जाएगा, इवनिंग मास्टर मिल जाएगा, थर्ड तो आपको ट्रेनर भी मिल जाएगा. This system has got corrupted, so I don't want to tell anything. Okay, and after doing for 1 year, we didn't have any support. I'm telling about pre-Google days. Not a book, no support. I lost. I was thinking I'm losing NLP. Okay. Second reason is I have first NLP book of India was released in Telugu by Dr. Akkineni Nageshwar in 2002. Second came in Tamil, 2002. Okay. And I thought to my company, I was working at that Bell, Bharat Heavy Electrical Limited. उन्होंने मुझे 1,00,000 रुपए का कैश अवार्ड दिया, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, आई एम टीचिंग माई कंपनी. फॉर ऑल दीज वर्क्स, द लाइफ मैगजीन एट दैट टाइम, आई थिंक इन 1997, they have written a small article on me telling that Dr. P.T. Sundaram is the NLP pioneer of India. Okay, with authority I'm talking. Okay. So I have practiced on myself, on my family, on my children. Now I am applying it on my married couples. समझ रही आप, ये है मेरी मिशन है. ये आप देखेंगे ना, ये दोनों को जोड़ना है ना, ये दोनों को जोड़ना है, दिल वालों को. मिशन ऑफ हेल्पिंग 1 मिलियन कपल्स. मेरी फ्रंट एंड है मार्स विनस, बैक एंड है NLP टेक्निक्स. दैट इज द रीज़न आई हैव मास्टर्ड, बिकॉज आई वॉज द AP chapter president. I was teaching them the practical exercise. 1 साल सिखाते सिखाते, for some period I was in my house, then afterward the group became bigger, then I had to shift to Indira Park. I was an unwilling coordinator, but that has become a blessing in disguise for me. Okay, by talking to people in 5 minutes, I can tell their personalities. So the point is, can we introduce NLP? Yeah, I think I presented a paper to Chandrababu Naidu at that time. He was the chief minister. Same. NLP talks about three types of learning: the visual, auditory, and kinesthetic. VAK हम कहते हैं. And that paper still it is there in my videos. You can see in my 1,000 YouTube videos. I have told that instead of every school
having section A, section B, section C. मैंने कहा section V for visual people who are visual learning, section A for auditory people, section K for kinesthetic people, VAK कहते हैं. एंड वर्धा जी रियली हैट्स ऑफ टू योर थिंकिंग. आपने यंग जनरेशन आपने बहुत ही अच्छी तरह सोचना शुरू किया. एंड आई एम टेलिंग यू ना, यू आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी जनरेशन. पीपल में थिंक दिस यंग जनरेशन, मोबाइल जनरेशन, नाचते हैं, गाते हैं, इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट करते हैं. बट जब आप वे आर थिंकिंग जो है ना, बहुत ही शार्प थिंकिंग है आप. ओके, थोड़ी अच्छी मेंटरिंग चाहिए, थोड़ी अच्छी आपकी डायरेक्शन चाहिए. बट रियली हैट्स ऑफ टू यू. आपकी सोच, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू गॉट इट, बट रियली यस, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस दिस to school and divide him to VAK sections, it is going to create a miracle. This I have presented to the minister at that time. Of course, we can only do the seminars and trainings, but we cannot apply it. So, इसलिए I would like to once again thank Varda ji, a representative of this younger generation, for thinking so creatively for the world. I wish you all the best, Varda ji, and you become an NLP practitioner. Don't become an NLP teacher. There are many people who talk about NLP without knowing NLP करते हैं लोग. Practice, 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 and practice. I wish you all success. Thank you. Thanks a lot.